स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्रं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध का 22वां अध्याय, जिसमें हम देख रहे हैं ज्ञानियों का कैसा स्थिति। जैसे कटक, केऊर आदि रचना विशेष रूप अर्थों से भिन्न सुवर्ण नहीं रहता, वैसे ही सृष्टि रूप अर्थ से रहित ब्रह्म भी नहीं रहता। यों ज्ञानी अज्ञानी को मान साम्य है। अर्थ जो दोनों को ये अर्थ लगता है। जैसे सोना, उससे अलंकार को अलग कर देने से सोना का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अलंकार जो है वही सोना है। तो इसी प्रकार वह कहते हैं संसार और परमात्मा ये दोनों एक ही चीज़ है। संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। ये एक दूसरे का परिपूरक और दोनों एक ही में है। इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी मानते हैं, अज्ञानी लोग भी मानते हैं। क्योंकि अज्ञानी लोग इस संसार के अंदर तो भगवान को ढूंढते हैं, है कि नहीं? और अज्ञानी लोग तो ऐसा ढूंढते हैं। ज्ञानी लोग भी तो संसार को ही परमात्मा मानते हैं। परमात्मा के बिना और कुछ नहीं होने से संसार नाम का और कोई चीज़ नहीं रहता है। जो सोना को देखता है वो अलंकार को सोना के अंदर देखता है। जो अलंकार को देखता है अलंकार के अंदर सोना ही देखता है। वो चांदी का अलंकार नहीं देखता है, सोने का अलंकार देखता है। दोनों ज्ञानी अज्ञानी दोनों का दर्शन जो है, दृष्टि एक बराबर है। लेकिन तत्वज्ञानी को सृष्टि आदि शब्दार्थ से रहित एकमात्र शिव रूप ही वह भाषित होता है। देखो, दो किस्म के लोग हैं।
एक तो सोना के अंदर अलंकार को देख रहा है और एक अलंकार को सोना मानता है, अलंकार के अंदर सोना को देखता है, ये सोने का अलंकार है। ये दोनों में दृष्टि तो दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थ में थोड़ा सा अर्थ भी दोनों बराबर है। अज्ञानी कहता है सोने का अलंकार है, ज्ञानी कहता है सोने में अलंकार है। इस प्रकार दोनों कह रहे हैं, एक ही चीज को देख रहे हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर यह है, ज्ञानी का अनुभव और कुछ है। अनुभव यह है कि जो अलंकार हैं और अलंकार का कोई अर्थ नहीं, ज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं। अलंकार नाम का कोई चीज है, ज्ञानी के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। वो देखता है सोना ही सोना, सब जगह पर सोना ही सोना देखता है। इतने ही अंतर है, बाकी सब दोनों बराबर है। Yesterday we saw the common worldly man sees the God and world together, and also the realized soul sees the God and the world together. Both see together. But for Jnani, for realized soul, there is no meaning of world, it is only God. And for common worldly man, God is hidden in this world. He will be found. He is searching for God. He gives the example of gold and ornaments. Ornament is made up of gold. Gold is the cause for the ornament. This is how the common people see, but the goldsmith sees only gold. He never sees, he has got no meaning of ornaments. He sees only gold. Like that, the realized soul sees only God. He has no meaning of the world, whereas the ignorant person sees world first, and God will be somewhere inside it. God is the cause for the world. सृष्टि शब्दार्थ से रहित होने से प्रलय दृष्टांत है। यह कहते हैं कि सृष्टि शब्दार्थ से रहित होने से, रहित होने में सृष्टि का कोई अर्थ नहीं रहता। इसको प्रलय का दृष्टांत देते हैं। कैसे? जिस तरह कल्प के अंत में एकमात्र अंधकार के रहते ब्रह्म घन में निर्विभाग और निराभास ही सृष्टि रहती है, उसी तरह तत्वज्ञानियों को असद्रूप भी यह जगत सद्रूप ब्रह्म ही भासता है। He gives the example again of the dissolution of the world. When the world dissolves, there is no world, no world remains in the end. At that time, what remains? The truth remains.
all these worlds, they remain in the truth. When all the ornaments, they melt away, they becomes only gold. They remain in the gold. In what form? Imaginary form. Whatever ornaments you want to make afterwards, you can make out of it. Because gold is there. Gold becomes only the ornaments. This is the difference. The realized soul sees only God. He never sees what is world. There is no meaning of world. World is a synonymous term for God. कहीं ये भी कहा गया है, इसी में हमारे योग वशिष्ठ में कहा गया है, जब ऐसा ही विचार करते करते कभी चलते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मर्ति ही परमार्थ गति सनरो भवसागरम उद्धरति. One who sees God in world, world in God, both together as one, he goes beyond this world. He has no bondage, no attachment for anything. He is ever released, he is ever realized, he ever understands only one God remains, nothing else is there. The beautiful example he gave now, the ornaments and gold. For the goldsmith, there is no meaning of the designs of ornaments, different ornaments. He sees only gold. Whereas the virgin girls who are going to marry within few days, they go for purchasing some ornaments in the market. They will see the design, they will see the glow of gold, and they will choose according to their choice what kind of ornaments they like. But for the goldsmith, everything is only gold. He weighs the gold and then gives the price. For him, both are same. There is a beautiful example. Once what happened, there was Ganesh Puja, Ganesh Chaturthi. In Maharashtra they celebrate it in a very grand way. A devotee goes to purchase a Ganesh idol and he thinks, I will not throw it in, after puja, I will not throw it in water, I will keep it and worship it every day. So he goes to purchase some permanent Ganeshji, means some metal Ganeshji. He is a rich man, so he thinks, why to purchase some brass or some other metal idol? I will purchase silver idol. He goes and to the goldsmith, give me a beautiful Ganesh idol. So he gives. What is the cost? Cost is, say, 1,000 rupees.
and he comes back, pays the money and comes back. In the way he forgot, "Arey, I have to purchase a mouse also, because without mouse Ganesh is not worshipped." वाहन चाहिए उनको, गणेश जी का वाहन चूहा है, चूहा लाना है. Again he goes back to the goldsmith. "Give me a small mouse." The goldsmith says, "There is no silver mouse. You can take a small golden mouse, you can take." Okay, give me. So when the customer asks, "What is the price?" he says, "It is 5,000 rupees." What? 5,000? Ganesh is only 1,000 rupees. And so small mouse, it is 5,000? Why? No. Goldsmith says, "My dear, it is Ganesh and mouse for you, but for me, that is silver and it is gold." Cost differs. Cost is different. This is how the goldsmith sees the metal only, not the idol, not the design made out of it. But the customers, they see the design and the idol or any ornaments made out of it. The vision differs. प्रलय में स्पंदन की सत्ता नहीं है, यों असंभावना करने वालों के प्रति दृष्टांत कहते हैं. प्रलय में स्पंदन नहीं है. स्पंदन नहीं मतलब, स्पंदन अगर पैदा होगा तब सृष्टि होगा. वहाँ पूरा समता है. स्पंदन नहीं होने से समभाव में सब कुछ एक ही रूप से रहते हैं. कुछ चित्र बनाए थे कागज में, उसको हम रबर में मिटा दिए तो सफ़ेद कागज ही तो रहा. उसमें कोई अक्षर नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कुछ नहीं, सफ़ेद कागज ही कागज है. उसके बाद तुम पहले कुछ लिखा था, ABCD लिखा था पेंसिल में, और उसको डिजाइन बना था बढ़िया, लेकिन मिटा देने के बाद वो नहीं रहा. अभी अगर लिखना चाहते हो, एक सुंदर चित्र भी बना सकते हो, एक बिल्ली बना सकते हो, एक कुत्ता बना सकते हो, एक घोड़ा बना सकते हो, एक गाय बना सकते हो. कुछ भी जो सोचोगे उसमें, उस कागज में बना सकते हो. ऐसे ही सृष्टि जब शुरू होता है, उस समय वो सोचने वाला जो परमात्मा के अंदर कुछ भावनाओं का उद्रेक हुआ करके हम मानते हैं, वो जैसे सोचेगा ऐसे ही बनेगा चित्र. चित्र को ही बनाता है, वो अपने शरीर में चित्र को बनाता है, और शरीर ही उसका चित्रशाला है, पट है, चित्रपट है. लेकिन जब कुछ नहीं है तो परमात्मा ही है. उसमें वो कोई भी चित्र का कोई अवशेष नहीं रह जाता है. तो जो कहते हैं प्रलय में, प्रलय के बाद सबका संस्कार मात्र रहता है, उसका क्या अर्थ हुआ? फिर संस्कार मात्र रह जाता है, इसको कैसे समझेंगे? They say after the dissolution of the creation, everything remains in the form of only impressions, memories. What is that?
If there is no impressions, huh? Impression means? Huh? Impression, what is impression? Impression? What is impression? Yes, what is impression? What do you see? Paper. Paper? Don't you see any sides? Where from it came? Do you see anything else now in the paper? Four parts. Where from it came? Huh? Do you see some lines in it? Yeah. These are called impressions. Whatever you like to have in it, everything is there. Four parts. We can make many parts. If it was not there, where from it came? Now how does it look? This is a form of a pot. We can put something in it. Where from it came? Now can you put something in it? And where has that gone now? Can you put anything now here? Can it hold anything? Where has it gone? It is there in the form of impression. This is called impression. It is only impression, memory, or something, some ideas. This is how impression remains, but the forms are gone. Forms and names, they are dissolved, and only the ideas remain in the form of ideas. Those ideas are non-conditional, they have no condition. They are not conditioned to time, space, and anything you think, nothing can condition it. Any time, any way, any form, any name, it can come out from it. After melting the gold, what will you make? Asked the goldsmith. The gold is, all the ornaments have been melted away. Now only gold remains. So what forms are there? What ornaments are there in the gold? Come on. Anything you like, you can bring out of it. As the mold is, as you think, so it appears to be. So in this way, the worlds or creations are different from each other. Some are similar, some are different, some are half similar, half different. Any way you think, it will appear before you. We have discussed so clearly. There is no world, it is in your mind. Your mind becomes the world. Whatever it thinks, those thoughts take some forms, and
some names, and that appears before you. You see the grass, beautiful lawn, isn't it? Will you eat it? But for a cow, what does he see? What does a cow see in the lawn? Beautiful, fresh food. This is how the form has a different meaning for different persons. There is no form, nothing. As you think, it appears to you. Everything is like that. Maharaj, from a relative point of view, you say this impression of an individual, like जी the impression for an individual, आपने बोला स्पर्श शब्द रूप रस गंध, ये 500 से जो है वो इम्प्रेशन बन जाता है, स्टोर हो जाता है. अब ये जो अलग अलग स्टोर होता है, एक ही में स्टोर होता है. एक ही में सब. Just as the ornaments are melted and it is stored. Where it is stored? In the gold only. Gold has got no form. So it is not relatively, should we understand that the स्पर्श में स्टोर होता है, touch सब कुछ एक ही बन जाता है. सब कुछ एक ही हो जाता है. फिर दोबारा इम्प्रेशन रिट्रीव होता है, फिर हो जाएगा. 5 हो जाएगा. 5 हो गया, 10 करो, 20 करो, क्या कौन फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ेगा? मर्जी तुम्हारे. हमारे पास 5 इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है करके हम कहते हैं 5 फॉर्म लेते हैं. जिसके पास 4 इंद्रिया हैं उसके लिए 4 फॉर्म दिखेगा. किसके पास 4 इंद्रिया हैं? सांप के पास देखो, सांप का आंख और कान दोनों एक ही में है. उसके लिए 5 इंद्रिया नहीं. समझे? बदल जाता है दुनिया. ऐसे ही तो अलग अलग स्थितियां हैं. जैसे सोचोगे, जैसे तुम मानोगे, ऐसे ही दुनिया दिखेगा. So should we understand dream is impression is different? Pardon? In Dream, yes, dreams are different. the dream impression is different from the waking impression? Of course. Relatively strong impression and light impression. Relatively. Strong impression and light impression. Here are strong impressions and here also some impressions are there. Light. Impressions are impressions. Some are little more visible, and visibility also differs. According to your conception, perception, everything is different. So he says, जैसे आकाश में इधर उधर चल रहे मेघों के उधर के अवयवों की अविभाग से उनकी
स्पंदमयी तथा दिशाओं के विभाग से शब्दमयी स्पंदमयी स्वानुभव चैतन्य रूप ही सत्ता है। वो सत्ता विरुद्ध धर्मों का एक काल में संबंध होने के कारण मानो जाति नहीं मानी जाती है कि वैसे ही प्रलय काल में भी भूतों की ईश्वर की स्पंदमयी सत्ता है, यह संभावना करनी चाहिए। वो एक उदाहरण और दिया, ईश्वर की स्पंदन की सत्ता ही सृष्टि काल में विभिन्नता का रूप लेता है। मैं अभी आपको ये दिखाया, इसमें कोई आप इम्प्रेशन वगैरह कुछ देख रहे हो क्या? कुछ देख रहे हैं? नहीं देख रहे, लेकिन इसमें तो दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। लेकिन मेरे मन में जो कुछ भावना मैं रखूँगा वो इसके अंदर दिख जाएगा। मैं जो सोचूंगा उसको मैं इसमें दिखाऊंगा। Whatever I think I will show in it. I think means this is different from this, but whatever I think means there is vibration of my thoughts in my mind. Whatever way I think, whatever way the vibrations are created, accordingly thoughts will be formed and accordingly the impressions will be here. See, already there are so many impressions. Are you not able to see this impression? If you come near, it will be visible. There is a line here. Ordinarily it is not seen. So those vibrations, whatever, see here, so many lines are there. One this, one this, one this. So many lines are there. These are impressions. And as you see, so it appears. In this way, when the creator or Ishwar we say, Ishwar the controller, overall governor or controller, whatever he thinks, however his mind vibrates, so these impressions will be visible. To whom? To him. He will see those impressions. And within those impressions are formed and they are called individual beings. Impressions also will have their own ideas of their own forms. How is the impression? Whether it is straight line or curved line, the line knows it. I am straight, I am curved. All these are just ideas, nothing else. So all these forms or names, whatever are visible in this creation, they are nothing but the impressions taken a form and name
in itself only by itself. The creator means the whole total body. It thinks in that way. You think it is my finger, isn't it? Is it different from you, from body? There is no difference. But if you think differently, it appears to be different from the body. Yes? Does it mean I, as an individual, one person sees a part of the impression, but if he is able to see the whole impression altogether, the wholeness, He becomes one with the universal being. yeah. That is how Vasudhaiva Kutumbakam. A person thinks this much is mine, and beyond that it doesn't belong to me. It belongs to some other person, it belongs to the government. All these ideas only an individual being have. But for the government, everything belongs to the government. Whatever is there inside in the country, it belongs to the government only. Even the sky, even the water, even whatever is there, everything belongs to the government. But individual beings, they cannot think in that way. They have got their limitations of thinking. This much belongs to me, this much is not mine. The moment he thinks everything belongs to me, then he becomes the overall president or the ruler. He becomes the cosmic being. For him, the whole universe is his family, his own wealth, his family. There is no limit to it. There is no difference between a king and a soldier. There is no difference. The king is very mighty fellow because only because of his mental condition. Nothing, no difference is there. He may be a thin and lean person, but his mind is so strong. His order is carried out. Whereas a soldier cannot order everyone. He thinks, I am a servant, I am a little limited being. Only thoughts differ from each other. There is no difference between the name and form, but only the thoughts differ from each other. So he says, आकाश में इधर उधर चल रहे मेघों के उदर के अवयवों की अविभाग से अनेक उनकी स्पंदमयी तथा दिशाओं के विभाग से स्पंदमयी स्वानुभव चैतन्य रूपी ही सत्ता विरुद्ध धर्मों का एक काल में समान होने के कारण मानी जाती है कि वैसे ही प्रलय काल में भी भूतों की ईश्वर की स्पंदमयी सत्ता है। यह
संभावना करना चाहिए। He gave a beautiful example. In the sky we see some clouds. There is some name and some form of the cloud also, isn't it? Those forms, they are different from each other according to the directions in the sky, different space, different directions of the sky. In the eastern sky, different form of clouds, and in western sky, there is different form of clouds. Those differences, are they there really? It is only cloud. Just like that, in the mind of the universal being, that is Ishwar, the creator, creator has only differences in no difference. It has got no differences. But when the individual thoughts are created, then there will be differences. The clouds are always cloud, and it holds only the water particles. And names and forms, they differ according to the directions and directions of the sky. Similarly, all these differences are there in the one creator's mind, and when they appear, they become different from each other. Difference in non-difference. जो सृष्टिकर्ता के मन में जितनी भावनाएं सब हैं, भावना ही तो हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई विभिन्नता है नहीं, कोई भेद नहीं है, सब भावना रूप है, स्पंदन रूप है। वो जब रूप लेते हैं, स्पंदन अपना हो करके अलग अलग व्यक्तित्व को गठन करते हैं, तब फिर देखो भिन्नता, सब में भिन्नता। वो भिन्नता और अभिन्नता दोनों इकट्ठे वो सृष्टिकर्ता के मन में है। वैसे ही ज्ञानी के मन में संसार और भगवान दोनों इकट्ठा है, अलग नहीं है। दिखता है अलग अलग, लेकिन अलग नहीं है। अलग अलग उदाहरण दे करके वो समझा रहे हैं, ताकि अच्छी तरह मन में बढ़ जाए, कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं, एक ही परमात्मा के बिना और कुछ नहीं। From a relative point of view, if we see a plate of jalebi, though the eyes can see, cannot taste, hand can touch but cannot hear, so that there should be understand relatively. It is a single jalebi, that object, it is five things are producing five impressions, or it is five different ways they are seeing the jalebi. 5 in 1, 1 in 5. Still more complications. How many times we come to the conclusion, as you think so it becomes. एक ही परिवार का 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप का, एक तो इंजीनियर बना, एक तो डॉक्टर बना। कैसे बन गए दोनों? एक ही माँ के पेट से निकले। हाँ, जब पैदा हुए तो वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या बने थे? कितने उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण आपके सामने हैं। वो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे सोचे वैसा बने,
डिफरेंस आ गया। डॉक्टर और इंजीनियर के अंदर कितने आकाश जमीन का फर्क है। यानी सब में एक परमात्मा ही भाषित हो रहा है। एक ही परमात्मा सब में है। सत्ता, सत्ता जो है वो सब में है, और वो है का अनुभव सबको है। वो अनुभव को ज्ञान कहते हैं, और वो ज्ञान से मैं हूँ करके वो खुश है, उस खुशी को आनंद कहते हैं। वो बदल नहीं सकता है, वो दुख में नहीं बदल सकता है। मैं हूँ। एग्जिस्टेंस, I do exist. Every being, everyone knows that I exist, which cannot be denied. And that knowledge of existence cannot be denied. And that satisfaction of knowledge that I do exist, that cannot be denied. This is how three aspects of one is permanent in every name and form and everything. Only the names and forms, they differ from each other somewhere, somehow. They can become one, they can become many, they can be different, they can go on dividing till eternity, go on dividing. It is your mind. एक को अनंत बना दो, बनाना तुम्हारे मन की काम है। इसीलिए कहा गया स्पेस एंड टाइम is ever expanding. It cannot keep quiet. It goes on expanding. As you think, it looks like that. मन में जो विभिन्न प्रकार की जो आ जाती है बातें, जैसे शंकाएं, वो तो अलग हो जाता है ना, वो जो ये डायरेक्ट इससे अलग हो जाता है। वही तो, ये सब विभिन्नता मन के खेल हैं। यही इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं शक्ति, इसको कहते हैं जो प्रकृति। और ये तीन ढंग से होता है, इसीलिए तीन गुण बता दिए। देखो इस तरफ से आप देखो, वो छतरी को देखो, छतरी आपको छतरी दिखता है या कैसे दिखता है? मैं तो छतरी को देखता हूँ, और मेरे मन में आ रहा है एक कमल का फूल अध खिला है, कमल का एक कली है जिसमें सब पंखुड़ियाँ दिख रहे हैं। मना कर पाएंगे आप? देखो जो एक छतरी था, उसके अंदर मैं क्या दे सोच सकता हूँ? सोचो, और भी सोचो, और भी कुछ सोचो। जो सोचेंगे उसमें मिलेगा। इसी को तो चाइनीज आर्ट बोलते हैं। एनीथिंग एनीथिंग यू थिंक। एक चित्र में हम देखते हैं, चित्र को चित्र करके नहीं देखते हैं, आदमी को देखते हैं, घर देखते हैं, मकान देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, चित्र करके नहीं बोलते हैं। तो वो चित्र से अलग है क्या? भावनाओं में खाली ये विभिन्नता है जो हमारा दिमाग को हमेशा शंका के समुद्र में तैराता है। तैरते रहो, डुबकी मारते रहो। शंकाएं, ये कैसे है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, क्यों है, कैसा है, क्या क्या, हम सब सवाल कर लेते हैं जिसका कोई जरूरत ही नहीं। ये तो है, बस कैसा है, क्यों।
ये है, बस हो गया। वहीं समझ जाने से फिर कोई शंका नहीं उठता है, कोई भी भिन्नता भी नहीं आता है, इसमें भिन्नता नहीं मिलेगा। और जैसे सवाल पूछा जाता है तो विभिन्नता आ जाएगा। और वो दृष्टिकोण के अनुसार, दृष्टिकोण मतलब भावनाओं के अंतर है, भावनाओं का स्पंदन में अंतर है। अब यहाँ पर चिदाभास का स्पंदन है, इसमें भी दृष्टांत कहते हैं। ये जो स्पंदन है, ये जो भावनाएं हैं जिसको हम सृष्टिकर्ता करके कहते हैं, ये कहाँ से आया? ये तो स्पंदनों का एक समष्टि रूप है जो एक है और वो अनेक में बदलेगा। Whatever vibrations we feel together as one, that we call it creator. And that creator, where it also is a vibration only, a wave, one wave. It can become innumerable as it thinks, so it will become. But this one wave, where from it came, it is an imbalanced state of balanced state, that's all. That is the fundamental principle. When the balance becomes imbalance, it itself becomes a wave. Wave is not different from the balanced state. The water wave is not different from water. Only the surface which was in a balanced state, it became little imbalanced. So we call the same imbalanced state as wave, ripple, and tides, and whirlpool, everything, bubbles. Name it as you like, go on naming it. But it is not different from the water. Water is always there. They cannot have their different identity other than the water. So he says, this creator also is a wave, just a vibration. And where is it? It is in the balanced state. That balanced state is known as the absolute truth, where there is nothing. The Paramatma. Swamiji, when we are in perfect harmony, we are the infinite, and when we are not in perfect harmony, we are the finite. Yes, yes, exactly. That is the essence of all the scriptures, all the philosophy and all the science, everything. That is the essence. The moment it vibrates, it becomes something which creates all the confusions, and when it is balanced, it is one and one alone, without a second. So if at all you say some creator, how many creators are there? As much as you think. कहा गया विष्णु के लोम लोम में ब्रह्मांड सब लटके हुए हैं। तो क्यों नहीं होगा? और विष्णु के शरीर में लटके हुए हैं या तुम्हारे मन में लटके हुए हैं, वो भी सोचने की बात है। कहाँ लटके हुए हैं संसार सब?
Where are these innumerable worlds? Are they? They are in the creator's mind, or creators are there in some other vibratory system? We call it absolute truth, or all these are in your mind. Where are they? As you see, so it appears to be. कितने उदाहरण दिए ना, एक चीज को हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। हाँ? माला को हम माला दिखते हैं, वो दुकान में जाकर के माला खरीदोगे तो उसमें कैसा सुंदर फूल लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर उसका कीमत होगा, लेकिन कीड़ों के लिए उसका कीमत है क्या? कीड़ों के लिए तो सब फूल एक बराबर खाने की चीज है। वो माला इकट्ठे हैं फूल सब या अलग अलग बिखरे पड़े हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माला तुम्हारे लिए भावना के अंदर माला है। The small insects, they don't see whether it is a garland of flowers or different colors, or they are together or scattered away. There is no meaning of all these words for a small insect which is trying to eat away all those petals. Meaning is you have to derive from it. As you mean, so it means. And what is the meaning? Meaning also is usefulness, how you use it. So it means, and so it costs also. The cost is value is meaning, meaning is value. As you use it, use is value, value is use. According to value, you use it. Can you use equally two papers which are named as $100 and $1? As you use it, as you value it, as you give the value, so it becomes. For ignorant person, some savage, wild person, it is only paper, some colored paper. Whether it is $100 or $50, what does it mean? Whether it is a euro or it is a dollar, what does it mean for that ignorant person? This is how the world जैसे तालाब आदि के भीतर स्थित तरल जल तथा उसके अंशों का स्पंदन द्वैताद्वैतमय है, क्योंकि तरलता के कारण भेद और अभेद का निर्वचन करना अत्यंत कठिन है। वैसे ही ब्रह्म में तत् जीव रूप आभास भी ब्रह्म संविदात्मक ही है। He gives another example, same example again and again. Just as the different waves are different from the water
inside water of the pond. They have got no different meaning for the water pond. It is all the same. Similarly, all these words have no different. They just appearance, they are just superimposed or attributes or appearances or assumed forms, imaginary forms in the absolute. In the absolute truth which is all pervading, which holds all these inside it, just as the waves in the water. The water has no meaning of waves, no meaning. तो अब बताओ, दो चार लहरें अलग अलग दिशा से आकर के टकराए आपस में और टूट फूट गए, तो तालाब को क्या दुख हो जाएगा? वो तो रोना चाहिए, और उसके लिए बहुत दुख करके उसके लिए फिर उसको कैसे फिर बनाए, इसके लिए चिंता करना चाहिए ना तालाब को। तो भगवान आप हम जैसे करोड़ों मर जाने से क्या उनको फर्क पड़ जाता है यार। हम कहते हैं भगवान दीन बंधु, बड़े बड़े दयालु हैं, बड़े क्षमाशील है भगवान। क्या सचमुच भगवान ऐसा होगा? बोलो। स्वामी जी, एक इस तरह से भी होता है कि परिवार में जो सुख दुख का लहर आता है, टकराता है, यहाँ भी उसको कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ? तो परिवार में जो सुख दुख आता है, हाँ। आपस में टकराते हैं, परिवार में बच्चे बड़े हुआ, वहाँ भी ईगो का जो लहर, ईगो का ही तो टकराव होता है। ईगो का भावनाओं का है, भावनाओं का खाली टक्कर है और कुछ नहीं। तो जो यहाँ एग्जाम्पल को पिक करके दे आ जाएगा, वही चीज़ यही है। बिल्कुल। आज टक्कर है, कल सब बराबर है। वही बच्चों के अंदर दिखाई पड़ता है ज़्यादा। अभी दो बच्चे लड़ाई कर लेंगे, 10 मिनट के बाद वो दोस्त, वो भावना में खाली टक्कर, अहंकार में टक्कर, ओनली ईगो clashes against each other. There is no difference, there is no fight, no battle is going on anywhere. Only egos or thoughts, they clash against each other. स्वामी जी, जो वेव्स हैं, तरंग है, वो इमेजिनरी तो नहीं कह सकते ना, वो पानी का एक भाग है, पानी है, तो परमात्मा ही है। हमें शायद उस तरह दिख नहीं रहा है परमात्मा, संसार या माया के साथ। हाँ, एक बुद्ध क्या जाने तालाब क्या है, एक बुद्ध क्या जाने तालाब क्या है। बुलबुला उसी का तो भाग हुआ ना। वो भाग है, भाग है, सब कुछ है, सब कुछ है, परंतु वो पागल को समझ में नहीं आ रहा है, कहता है मैं मर गया। क्या करे? तालाब उसके लिए क्रियाकर्म करने के लिए बैठेगा क्या? जी गुरु जी। Around 17th of May is Popper's कठपुतली है। कठपुतली भी, कठपुतली तो कहोगे तो कहो, और भी कुछ, मुझे तो कुछ कहना नहीं आता है, क्या कहें? जगदम्बा कहें या अम्बा कहें? बोल भैया, क्या बोले? अम्बा कहें, जगदम्बा कहें? So it should be understood then the puppet
यस, बोलो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बोलना बोलो, अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा दुनिया आपस में लड़ मर करके सब खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खूब पनपे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मरुभूमि में एक सुंदर उदाहरण देखो। मरुभूमि में वो रेत की झाड़ चलता है, रेत का झाड़, हवा चलती। In the deserts there will be storms because it gets heated up very soon, and very soon it becomes cold also, because the sands, they get heated up very quickly and gets cold also very quickly. So generally in deserts there will be sandy storm, and when there will be heavy wind, the storm will be taken away in the air, and it will move somewhere, and all of a sudden it will gather up. A sandy hill is formed. So many sandy hills, every moment is created and destroyed. What does it matter to the desert? Is there any gain or any loss to the desert? This is how the creations are created and dissolved every moment. The sandy hills, by the sway of sandy storm in the deserts, this is how the creations are. Every moment it gets piled up, and again it dissolves. There is no loss, no gain. It is only the play of the either heat or the wind or the sway, or we call it storm. Name it, call it as you like. Something is going on. There is no loss, no gain, no worry, no problems for the desert. It is all the same. You know, as per the scientists, we have some abnormal atmosphere on the earth plane. You know what are the reasons? Sometimes our climatical condition, we pollute it, we disturb it, so there is global warming and many things. It is local, but the earth is influenced by the other planets and by the sun also. There happens sometimes the storm of fiery storm in the body of the sun. It is not stable. The helium is always getting changed. That's how it radiates heat and light and everything, energy. And there is always misbalance because change. Nobody can regulate it according to its own thinking. No, it should be like this. You cannot say like that. That is called nature. There is
fiery storm. Many times it happens in the sun. And in Jupiter also, many kinds of storms. Always unusual climatical condition on the Jupiter. Accordingly, the Earth also is influenced. Every atom is related with the other atom in the whole universe. Related, connected, and influenced and influencing. It is influenced by others and it influences the others. On this basis only the astrology is built up, science of astrology. Every being is influenced by the other being, the creatures in the universe, that means the planets, the stars and all these comets and subplanets, so many things, small and big. Everybody has its own constitution and own nature, and that influences others and is influenced by others. This is how the nature of the universe, universal nature. And within that, your small earth, where does it exist, nobody knows. And in that, your climate, and you say, "Oh Lord, are you so cruel, hard-hearted?" People say you are very kind. I don't see your kindness. Does he hear at all? बोलो, क्या बोलोगे? At the same time, Gurudev's formula, and which is absolutely right. Many have their experiences over it. Everybody has to agree. What is the formula? No prayer is unheard, and prayer works wonder. Prayer reaches that realm where reason cannot. Your intellect cannot reach there, where prayer reaches. Then, what will you say? God is deaf and dumb? From which side you have to think? From which line you have to think? Come on. Yes. Para should we understand that logically player should be ananya chintayantoma? That is the only way. And that also is based upon simple formula. As you think, so you become. If you think the prayer works wonder, it does. It does work wonders. And if you think God is not at all anywhere, that also is true to you. Nobody can challenge you. If you say, I have not seen the God, how can I believe? Yes, you are right. There is no God. But some intelligent person say, there is no God, but are you not there? Don't you believe yourself? Let the God go to hell. Do you believe yourself? Yes, I am.
So you are my God. You do exist. You know you are, and you are happy. That's all. You are my God. Oh, break your head and keep quiet. Simple formula that is always applicable everywhere, eternally, since time immemorial until eternity. It will go on as you think, so you become. So you see, this is the only formula. And that depends upon your mind. And mind is not there. Go to hell. If you can keep quiet, stop your mind, then you can see what is mind. All these, according to our analytical process, we have some principles according which we go on analyzing, and in the end we come to a standstill position. No conclusion, nothing. No higher you can reach. That's why it is said, the truth is beyond your mind and intellect. Don't try to understand what is truth. Keep quiet if you can. That is enough. That is enough. If you can keep quiet, all the problems are solved. Don't disturb me. बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई आकर के बोलते हैं स्वामी जी थोड़ा कुछ सेवा बताओ ना। कोई तो आलसी बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोई कोई कहते हैं स्वामी जी सेवा के बिना क्या करेंगे, थोड़ा तो कुछ काम बताओ ना, आश्रम है सेवा करना चाहिए। तो जो अपना है, जो समझदार हैं, जो अपने बहुत नज़दीक हैं, उनको मैं क्या कहता हूँ मालूम? भाई मुझे छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये सबसे बड़ा सेवा होगा। मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत हो गया। मुझे अगर चुप बैठने दे दोगे तो ये सबसे बड़ा सेवा होगा। मुझे तंग मत करो यार। तो फिर ये जैसे चुप बैठ गया आदमी, तो फिर क्या ईश्वर वहाँ से फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? मैं यही कहना चाहता हूँ आखिर में, इतना हम जो सिर फोड़ते हैं, इससे कुछ मिलता है क्या? यही मिलता है समझने के लिए कि ध्यान किसको कहते हैं और कहाँ शांति है, और किसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा। हम किसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा। यही परिणाम हमको मिलता है इसी से। आंख खोल करके या आंख बंद करके हम जो भाग रहे हैं, दौड़ा दौड़ी लगा हुआ है, ये सब बेकार है जिंदगी। अगर चुप हो सकते हो तो वहीं शांति है, और वही हमारा लक्ष्य है, और उसी को हम ध्यान कहते हैं। वहीं पर सब कुछ मिलेगा। ये सिर पटकने से इतने ही मिला, अवशेष ही सच है। अवशेष नेति नेति नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, नहीं 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 करते जाओ, आखिर नहीं नहीं को नहीं कर दिया तो जो अवशेष रहा वही हमारे लिए शांति, सुख, अनंत आनंद का भंडार है। पर क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं।
मनाने की मानता नहीं। मनाने पर भी नहीं मानता है तो फोड़ते रहो सिर, हम क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता मदद। जितना ढूंढते फिरोगे उतना खड्डे में गिरते जाओगे। पर फिर तुम तो क्यों ये सब हल्ला गुल्ला करते रहते हो यार, किसको सुनाते हो, क्यों सुनाते हो, पागल कहाँ के। हाँ, हल्ला क्यों करते हो? हल्ला इसीलिए करते हैं कि तुम भी हल्ला करते रहते हो, तुम चुप नहीं बैठते हो इसीलिए। टाइम पास, टाइम पास। किसी ने कहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन न च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्ख लोग टाइम पास कैसे करते हैं? सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करते रहेंगे, सिर फोड़ेंगे, ऐसे ही टाइम पास होता है। अरे पंडित लोग क्या करते हैं टाइम पास के लिए? चलो कुछ चर्चा करेंगे, चलो कुछ मौज करेंगे, शास्त्र का विनोद करेंगे। काव्य शास्त्र विनोद है नहीं, ये तो हमारा विनोद है, हमारा विलास है। टाइम पास करेंगे, कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, किसी को कुछ मिला न मिला हमारा मतलब नहीं। हमको तो टाइम पास करना है, मौज मारना है, क्योंकि और करेंगे, करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ जी, पंडित लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, वो इसी रास्ता में जाएंगे। मूर्खों को और कुछ नहीं मिलता है, वो दो दो हाथ करेंगे। इसीलिए करते हैं, इसे मिलना कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना। एक हमारे कोई गुरु भाई आए थे, अभी इधर नहीं है, कहीं गए हैं। 4 साल इधर लगातार रहे, कहीं से आए, 4 साल लगातार जोगवशिष्ठ पढ़े, सुने, और फिर आखिर में वो पागल बन गया, पूरा पागल बन गया। और कहता है भाई मुझे, मैं यहाँ आया था कुछ पाऊंगा करके, कुछ मिलेगा मुझे, अभी मेरे पास जो था उसको भी खो बैठा हूँ, कुछ मिलना नहीं, कुछ खोना नहीं, जो था वो भी खो दिया हूँ। कुछ नहीं, लटक रखा हूँ त्रिशंकु। अब मुझे ना मिलना कुछ है ना खोना कुछ है, यही मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये रिमार्क से, सही कहा, जो था उसको भी खो बैठा। अब ये कह रहे हैं, इसी रीति से पूर्वोक्त अहंकार और जगत ये दोनों एक दूसरे के अंदर स्थित हैं, यह समझ लेना चाहिए। So now he comes to the conclusion. Now after all these breaking head, we come to this conclusion: the ego and the world, they are within each other. The ego means the working of the thought, the mind, the mental system, whole mental system, that is called ego. And the world, they are within each other. Yes, they are not different from each other. जिसको हम ईगो कहते हैं वही है जगत। पहले अभी तो कह रहा था जो भगवान है वही जगत है। अभी पलट दिया, सीन बदल चुका है। पर दोनों सीन में एक ही पिक्चर है भाई।
हाँ जी। कोई उस महात्मा का बताना चाह रहे थे। हैं? महात्मा का अरे हाँ, अब तो भूल गए, अभी तो गोपीचंद। टाइम हो गया। गोपीचंद था स्वामी जी। हैं? गोपीचंद। गोपीचंद, हाँ गोपीचंद का कहानी सुनाना था, अब लोग सब भूल गए। और वो भी मन कैसे चिड़िया बना, वो कहानी सुनाना था। अरे यार, आप लोग तो फिर कल के लिए रखो, अब टाइम हो चुका है। अभी इतना में हम समाप्त करेंगे आज का कि जो अहंकार और जगत, इसमें कोई भेद नहीं है। एक तरफ से देखे जो कोई घबराना नहीं। अभी कह रहे थे भगवान और दुनिया में कोई अंतर नहीं, और अभी कह रहे हैं अहंकार और जगत में कोई अंतर नहीं। कैसे? अरे एक तरफ से वो टेल दिख रहा था, एक तरफ से हेड दिख रहा था, तो क्या वो कॉइन बदल जाएगा? सेम कॉइन has the one side head, other side the tail. The coin is coin all the time. Now he said, the world is God, God is world. And now he says, after all these analysis, we come to the conclusion, the ego is world, world is ego. And that ego is nothing but your mental process, the vibratory process. Okay? Here we end for today. Tomorrow, if you remember, we shall start with the two stories. One is mind becomes the bird. It is a true story. It is an event. It is not a story. Experience of a great monk. How his mind became a bird and helped him in the utter helplessness state. And दूसरा Gopi Chand, story of Gopi Chand, how the fruit is taken, plucked from the plant when it is ripened and enjoyed by the parrot or by the garden owner. It enjoys the fruit. When it is ripened, automatically it will drop down. So before dropping down, let us pluck it and enjoy it. The story of Gopi Chand, how he became immortal, the king. Tomorrow we shall see if you remind me. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।